Assalamu alaikum, ladies. So today we are going to do week 11's handout, which is sharing experiences through narratives. So narrative is basically a story. It is a term which can be used as a noun and as an adjective. तो नहीं आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आपको एक नैरेटिव जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, या फिर आप ये भी कह सकती हैं कि मैं एक नैरेटिव एस्से जो है एडजेक्टिव यानी इसम सिर्फ के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप कहेंगे कि मैं एक नैरेटिव आपके साथ शेयर करती हूँ तो वो आप इस सेंस में यूज करेंगे कि मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ। ठीक है, उसमें आप एक अकाउंट देंगे ऑफ इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस एंड देयर डिटेल्स, और इसमें ये यूजुअली एक स्टोरी टेलिंग प्रोसेस ही होता है, लेकिन एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो फॉलो किया जाता है। तो जिस तरह से आपको याद होगा कि आप लोग अपने अर्ली जो है स्कूल करियर्स में, स्कूल लाइफ में लिखते थे एसेज, अ विजिट टू अ हिल स्टेशन, अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, और उसमें फिर उस पूरे दिन का कि वी वेंट देयर 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 और इस तरह से हम लोगों ने ये सारा कुछ किया, तो यू मेंशन ऑल दैट। तो दैट इज द काइंड ऑफ एसे which is basically telling a narrative, a story of an entire series of events. इस तरह से you can write a novel, you can write an article in a narrative form. तो जिस तरह से a novel written from the point of view of the main character is a narrative. तो जब main character कहे कि मेरे साथ ये हुआ और मेरी कहानी ये है, तो वो basically एक narrative style का novel है। फिर एक article जो blogger ने लिखा अपने किसी experience के बारे में कि जो traveling across the United States on a bicycle would most likely be a narrative. तो ये इस तरह की ब्लॉग और व्लॉग्स जो होते हैं which is recounting the events of a certain day or a certain period, they are in the chronological order, वो एक narrative कहलाते हैं. If you look at narrative when used as an adjective, you will find that it complements just about any form of writing or art. There are narrative poems, narrative works of visual art, narrative essays, and narrative dances. If you can make something tell a story, it is a narrative. ठीक है, so the types of narratives, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपकी एक नैरेटिव वॉइस होती है अगर आप फर्स्ट पर्सन में कोई चीज बयान करें, या फिर आपका नैरेटिव स्टाइल होता है कि आप उस स्टाइल में एक ऐसे अगेन एक फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव व्यू के साथ आप लिखेंगे, दैट इज अ narrative style. Other forms of art can also be considered narratives. You can choreograph a narrative dance or paint a narrative series of pictures. This is a personal interpretation, of everything. Autobiographies are essentially narrative. Autobiographies जो आप बीती होती है, अपनी स्टोरी आप खुद बताते हैं. They are written in the first person and describe the events of the storyteller's life. Theatrical monologues are narrative. Theatrical monologues के theater में जो monologue होता है, एक character सिर्फ जो बात कर रहा होता है, that's a narrative. In a monologue, the character tells an intimate story, often addressing the audience, asking questions and seemingly seeking answers. ठीक है? Essays can also be narrative. An essay is a literary composition about a single subject. तो किसी single subject के बारे में कोई essay हो, तो उसका style जो है वो narrative होगा. They are often personal, anecdotal. उसमें कोई वाकयात आप अपने anecdotes share करते हैं and told from the writer's point of view. So that kind of an essay is a narrative essay. So why do we use a narrative? It is because everyone loves a story. Everyone has a story. Everyone wants to tell a story. Narrative is an engaging style of writing. It immediately invites your audience into your world and offers them a chance to participate in the story you are telling. A reader can easily get wrapped up in a narrative. So this is related and connected to the human experience. इसलिए narratives को लोग पढ़ने और लिखने में enjoy करते हैं. ठीक है? Narratives are social. They are at the heart of how we communicate as social beings. If you look for definitions, descriptions, and discussions of what narratives are, you will find many references to the natural humanity of narratives. तो उसमें definitions, descriptions, discussions, जो भी ये सारे social जो हैं हमारी communication के constructs हैं, जो नैरेटिव्स में एम्प्लॉय किए जाते हैं कि हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं, समझते हैं, या दूसरे को डिफाइन करने को कहते हैं, तो हम सोशली किसी चीज का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं. हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं, तब भी हम सोसाइटी में उसकी अहमियत और जिंदगी में उसकी अहमियत को देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है ना? कुछ रिलेटेड टर्म्स जो नैरेटिव की हैं वो है नरेटर, who is the person who is telling the story or who is recounting the events of a certain day, or it's also a story. So narrative में भी you use an introduction, you use a plot,
Character, setting, climax, conclusion, everything like that is included in the narrative. जिस तरह से एक स्टोरी में होता है. और narrative is generally written, जैसे पहले भी कहा, from the viewpoint of the writer or storyteller. First or third person narratives are the easiest. So अब आप लोगों ने क्या करना है, narrative style की एक आपके साथ मैं रीडिंग शेयर कर रही हूँ. It's a serious case. इसका नाम है, टाइटल है, it's a narrative short story. You have to study this. Those who have the handouts can use the handout. Those who don't have the handout can pause the video and just give a reading to this story. And when you have read this story, you will come to class and discuss with me, okay, who are the main characters? What happened in the narrative? What was the plot twist? What was the action? How did the story move forward? What happened as a crisis? कहाँ पे आया क्लाइमेक्स, कहाँ पे आई रेजोल्यूशन, और एंड किस तरह हुआ. तो इस तरह से आप लोगों ने एक तरह से समरी प्रेजेंट कर देनी है इसकी. मुझे उसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में आपने मुझे बताना है, और उसके बाद जो है आपने बिल्कुल इसके मेरिट्स पे कि इसमें क्या बताने की कोशिश की गई और क्या नहीं, वो चीज़ आपने मुझसे डिस्कस करनी है. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे. नैरेटिव्स की आपने इस बेसिक स्टोरी को पढ़ना है एंड क्लास में आना है, एंड वील डिस्कस द रेस्ट इन क्लास. थैंक यू बेटा.